परसों से आपने लगातार इस तरह की खबर सुनी होगी, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी या मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ कश्मीर में न्यूज़ आउटलेट्स हैं वहाँ से भी। वो ये कि हमारे यहाँ कश्मीर का एक होनहार नौजवान जो बाहर लंदन में एक अहम इम्तहान पास कर गया और वहाँ इस वक्त बतौर लीगल एडवाइज़र काम कर रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है फैज़ान नज़ीर से जो इस वक्त हमारे साथ है। गालिबन उनके बारे में आपने कई सारी बातें तो जानी होंगी, जाहिर है इंटरव्यूज देखे होंगे, लेकिन शायद आज का इंटरव्यू कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। शायद आज का इंटरव्यू तमाम नौजवान दोस्तों के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए इंस्पायरिंग साबित होगा और वो भी इस राह पर चल सकते हैं। फैजान, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इकरा आपका इस चीज़ के लिए। पहला बुनियादी सवाल जो कि आम होता ही है वो ये कि जो ये सफ़र है जाहिर है मुख्तसर तो नहीं रहा होगा। पहले पढ़ाई यहाँ, उसके बाद आगे एक इंसान ने जो गोल सेट किया होता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, उसके लिए मेहनत, ऐसा कुछ था? बिल्कुल, आई थिंक जर्नी टफ थी बट कोई आई थिंक लाइक एनी अदर स्टोरी इसमें कुछ डिफरेंस नहीं था। सेम स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क, patience, perseverance, constant failures, and those failures feeding into your plans of how to make a grand success. I think academically और professionally भी ये तीनों चीज़ें जैसे मैंने बताया और मैं follow करता हूँ, ये मेरे तीन basic principles है: patience, hard work and perseverance. तो ये I think commonality of theme जैसे होती है काफ़ी success stories में, वही सारी चीज़ें हैं। तो nothing extraordinary, but yes, personally for me it was quite good. हाँ, ऐसा है क्या कि आप जानबूझ के से छुपा रहे हैं कि वो जो सारी चीजें शायद लोगों को मालूम न पड़े? देखिए, मैं पर्सनली प्रीचिंग में इतना बिलीव नहीं करता हूँ जस्ट बिकॉज कि अगर मैं लोगों की नज़र में अगर मैं सक्सेसफुल हूँ या अगर मैंने कोई प्रोफेशनली कोई माइलस्टोन हासिल किया है, मुझे ब्रैगिंग राइट्स नहीं मिलते हैं कि भगवान पतलू कने तो ऐसा कोई जिद पर करो, तो ऐसा कोई पर करो, क्योंकि मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझसे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। कहीं मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी डाउनटाउन श्रीनगर में ऐसे मैंने कई लड़के और लड़कियां देखी हैं जो immensely talented है, and I don't have to look forward for anything else. मैंने for example like you bring out, you do actually a very important social service, and like social service is civil service. So I am in no way superior or in any case above or overloading you. तो मैं इसलिए ज़्यादा उन चीज़ों में, वो ब्रैगिंग में, वो बोलने में नहीं उतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मगर हाँ, इतना कहूँगा कि जो हमारी बेसिक कश्मीरी टेनेट्स और प्रिंसिपल्स हैं हार्ड वर्किंग की, हम एक बहुत ही जुझारू कौम है, हम बहुत ही डेडिकेटेड कौम है, वो अगर हम बेसिक प्रिंसिपल्स अपनाएंगे जो कि हर एक कश्मीर के अंदर इनकलकेटेड है, तो आई थिंक वी आर जस्ट बाउंड फॉर सक्सेस। पहली मर्तबा बाहर जाने का मौका यानी फॉरेन जाने का मौका आपको कब मिला? एकेडमिकली और प्रोफेशनली बाहर जाने का मौका मुझे सितंबर 2021 में मिला, जिसकी बुनियाद मैंने अराउंड 2020 में रखी, क्योंकि जब कोविड चालू हुआ मैं तब प्रैक्टिस कर रहा था एज अ लॉयर एंड कमर्शियल कोर्ट्स में। I was a commercial lawyer. Already आप lawyer? Yes. I qualified as a lawyer back in 2018 और मैंने प्रैक्टिस कर रहा था 2-2.5 सालों से। माशाल्लाह, even then my career was going really well. और I was practicing in Delhi. और तब जैसे ही ये चालू हुआ कोविड, तो कमर्शियल कोर्ट्स बंद हो गए एंड ई कोर्ट्स, वर्चुअल कोर्ट्स चालू हो गए, तो फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं थी। बस पद गारे तो इस पद गारे घर पे ठीक करा वर्चुअल कोर्स अटेंड। फिर फ्री टाइम था तो मैंने सोचा कि अब मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए भी देखूं। इट वाज अ राइट टाइम बिकॉज आई हैड थियोरेटिकल नॉलेज, देन आई हैड प्रैक्टिकल स्किल्स। वो ससानी दशवे कंबाइन करूँ तो वो मास्टर्स क्या रोज मैंने खतर बेहतर। देन आई अप्लाइड फॉर वेरियस कॉलेजेस एंड to prove to people that I'm just as human as you, I applied for Oxford and Cambridge, got rejected very well, very nicely, but कहते हैं ना, everybody has a grand plan, God has a grand plan for everyone. So that's where my initiation की बुकारवात बुकित पढ़कर further studies बुकित पढ़ वो तो इंग्लैंड, ये यहाँ से चालू हुआ।
स्टार्ट हुआ? अच्छा, जो लॉ के हवाले से जो बुनियादी तालीम है वो आपने यहाँ कश्मीर से ही हासिल की थी? अनफॉर्चुनेटली नो। मैं थ्रू एंड थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। मैंने अपना बैचलर ऑफ कॉमर्स और एलएलबी अपना जो है वो नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। जो कि उसका मैं काफ़ी शुक्रगुजार भी हूँ कि मुझे वहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर मिला। मैंने अपने एलएलबी के दौरान काफ़ी इंटर्नशिप्स करी। ड्यूरिंग दैट पीरियड मैंने आई थिंक 2017 की बात है, आई एम नॉट वेल वर्स, आई थिंक, या 2016, मैं आई वाज आल्सो लॉ इंटर्न टू देन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एन वी रमन्ना, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने. So I was his law intern, and if you are listening, sir, thank you for the opportunity. But yes, it was quite an eventful academic journey. अब जाहिर है ये जो आपके जहन में खाका था, एक स्केच था कि मुझे अब ये अचीव करना है, यहाँ पहुँचना है, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया अभी कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे जहनों में है, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, वहाँ से रिजेक्ट हो गया है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने बोला नहीं ठीक है मैं और कुछ देख लेता हूँ। ये जो G7 का इम्तहान है इसके बारे में ज़रा ब्रीफ करें, क्या है? देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे नहीं पता कि ये पब्लिकली एक्सेप्टेड होगा कि नहीं होगा, बट पर्सनली मैं इस चीज़ में मानता हूँ कि जो एजुकेशन जो चीज़ है वो एंड नहीं है, वो एक ज़रिया होता है. इट्स अ मीन्स टू एन एंड. आप तालीम हासिल करते हैं या तो बेहतर इंसान बनने के लिए, या प्रोफेशनल माइलस्टोन हासिल करने के लिए, या कोई चीज़ अचीव करने के लिए. इट्स अ टूल टू अचीव समथिंग. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि मैं फिजिक्स पढ़ूंगा तो फिजिक्स, या तो मैं फिजिक्स बनूंगा या मैं आगे जाके पायलट बनूंगा. सो सिमिलरली एजुकेशन फॉर मी वाज अ मीन्स. सो इवन दो आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड, दैट डिड नॉट डिटर मी कि हाँ जी मैं कहीं. आजकल तो मुझे लगता है कि देयर विल कम अ टाइम कि यूनिवर्सिटीज विल बी रिप्लेस्ड बाय यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी नॉलेज अवेलेबल है फॉर फ्री. In fact, right now I am actively learning artificial intelligence, law, जो chat GPT, LLMs जैसे हैं. Even though I'm a lawyer, मेरा कोई काम नहीं है उसका, but I try to inculcate skills. मैं कोई यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ रहा, मैं सिंपल यूट्यूब से पढ़ता हूँ. रात को सोने से पहले 1 घंटा मैं इस चीज़ के ऊपर देता हूँ. आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. आई ट्राई टू डू दिस पर्सनल स्किल्स एडिशन के लिए. अब तो उसी हिसाब से जब मैं वहाँ गया, जब मैं एलएलएम कर रहा था, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा G7 के बारे में. सो बेसिकली in India, India is a semi-federal or semi-unitary, quasi-unitary state. तो हमारे पास क्या है कि यूनियन लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे बाइफ्रिकेशंस होती है सिविल सर्विसेज की. जैसे कि आपका यूपीएससी का हो गया, वो यूनियन वाइड होता है, फिर डिफरेंट स्टेट्स का होता है. ये हमारा अर्स्टवाइल ये जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है, ये हमारा जो अर्स्टवाइल ब्रिटिश मॉडल था, जो ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश राज मॉडल था, ये उस पे बेस्ड है. मगर ब्रिटिशर्स ने इसको और एडवांस करा है ताकि वो बहुत पीपल रिफ्लेक्टिव करे इस चीज़ को. सो they have lots of multiple entries to their bureaucracy. कुछ बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे जिसको ग्रेजुएट स्कीम बोलते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है हमारे आईएएस के लेवल पे, क्योंकि जब आईएएस की क्वालिफिकेशन है क्या कोई ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यू कैन एंटर. सिमिलरली दे हैव दैट, दे कॉल इट ग्रेजुएट स्कीम. और फिर उसके बाद देयर आर वेरियस लेवल्स, ईओ, आई थिंक एचओ, फिर बहुत सारे. देन यू कम एट G7, देन G6, फिर आता है सीनियर सिविल सर्विसेज, SCS. आई एम एट G7, सो आई एम एट मिड लेवल ब्यूरोक्रेसी. एंड आई क्लियर. सो दे, जैसे कि हर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देयर इज एन ओपन एंड फेयर कंपटीशन, वो भी ऐसा ही करते हैं. दे रिलीज द वैकेंसी, दे एडवर्टाइज इट, एंड पीपल दे अप्लाई फॉर इट, एंड दे compete with each other. You get graded, you get marks, and according to your marks you get selected. I was able to apply for it because in their eligibility requirements of nationality, they include Commonwealth citizens, and I, being a citizen of India, am a Commonwealth citizen, and therefore I was able to apply for it. जैसा कि आपने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या रखा गया होता है, उस हिसाब से एक इंसान अप्लाई कर लेता है. उसमें एक ये भी था कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज. और क्या होता है इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सो नेशनैलिटी रिक्वायरमेंट जब आप फुलफिल करते हैं, सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स राइट टू वर्क मांगते हैं, बिकॉज आप ब्रिटिश नेशनल नहीं है तो आपके पास राइट टू वर्क नहीं होता. कुछ मांगते हैं, कुछ आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसी एडवर्टाइज एंड द लेवल फॉर विच इट इज एडवर्टाइज. यूजुअली ग्रेजुएट स्कीम्स के लिए दे डोंट ऑफर स्पॉन्सरशिप, बट मे बी ऑन हायर लेवल्स दे मे और मे नॉट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट देयर एपेटाइट फॉर स्पॉन्सरशिप इज एंड व्हाट देयर इमिग्रेशन लॉज अलाउ. उसके अलावा
आई वुड से जो नॉन ब्रिटिश नेशनल्स है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज दे आर कम्पीटिंग विद ब्रिटिश नेशनल जो कि ऑलरेडी वेल वर्स्ड है उनके हिसाब से. सो इट वाज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग इन दैट सेंस बट thankful to Allah वो मैं hurdle clear कर पाया and I was able to enter at a good level of the bureaucracy. आपने वजह फरमाया खुद कि इसमें जाहिर है जो तैयारी तो है वो करनी पड़ती है एक इंसान को, लेकिन जैसे कि हम यहाँ देखते हैं अगर सिविल सर्विसेज के लिए कोई एक नौजवान सोचे कि मैं इसके लिए जाऊंगा तो वो भी तैयारी कर लेता है. फिर कुछ मरहले होते हैं जैसे प्रिलिमिनरी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू सेशन रहता है. इसमें क्या है? सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, सिमिलर है. सो जैसे हम पे प्रिलिमिनरी के अंदर प्रिलिम्स में बेसिकली हम छांट छेस कराएं. Similar is their concept. They don't use the word preliminary because preliminary has a word elimination in it, so it's a bit negative. So they use something called sifting, initial sifting they call it, initial sifting. So initial sifting, so they will sift out the relevant applications. Then Ashiyat mains where they test your general knowledge. They have a similar competency examinations where they test your competency skills. It is based on I think other 50% of that is based on their success profiles, civil services success profiles. वो उनका अपना एक तरीका होता है टेस्ट करने का. When you clear that, so you clear initial sifting, you go to this stage, and then when you clear this stage, you go to interview. And when you clear interview and you have good marks, you clear the threshold, पछू to civil services enter करा. अभी कितना वक्त हुआ होगा आपको इसके साथ मुंसलिक? So I cleared it actually last year, July असमज. फिर मेरी background checks and everything पतकुन में join याथवरी असमज January 9th of January to 2023. Patuzu probation asmaz it persani civil service probation asan and my probation was recently approved May asmaz. So abhi I'm full-fledged civil servant. आपको पता है कई सारे लोग जिस वक्त देख रहे हैं वो ये भी उनके जहन में ये भी स्केच एक होता है कि अच्छा ठीक है इतना बड़ा इम्तिहान इन्होंने पास कर लिया, ज़ाहिर तनख्वाह भी बड़ी अच्छी खासी होगी. कितनी तनख्वाह? देखिए without disclosing, नहीं कोई बात है. Let me answer it as diplomatically as I can. I'd say it's comparatively well paid. अगर वो compare कर ये किस compensation space तो of course it is comparatively quite well paid. मगर तच पर तिम सब खर्चे थे taxes थे, but even though if I take everything out, it's well, I'm satisfied. अल्हम्दुलिल्लाह. आखिर लफ्ज़ यही अल्हम्दुलिल्लाह. खैर, जब जाहिर है ये खुशी का मकाम न सिर्फ घर वालों के लिए होता है बल्कि पूरे कश्मीर के लिए, जब इस तरह का नौजवान बाहर जाके कोई इस तरह की कारकर्दगी करें. घर पे कैसा रिएक्शन रहा, क्या माहौल था? मेरे फादर जो हैं he is very I never told my parents, मतलब मैं उसने मन मोते कि ना till the time I cleared it actually they had no clue. So जब when I cleared it I called them, अच्छा ये हो गया तो my father is like ये क्या गो तो मुझसे यार वो civil service because my parents are illiterate. They don't understand these terms. The musa it put DC cho asan they put she the one acha so मैंने कोई DC मुसा legal advisor so क्या गो. So मैं equivalent terms में बात कर रहा था उनसे कि मतलब I was giving him a relatability के equivalent क्या चाहिए so that he has a benchmark to compare what I achieved. So that's my father. My mother is very nonchalant. She doesn't care. I mean, she's really like, अच्छा करता, अच्छा ठीक, अच्छा बात क्यों होता, अच्छा चलो ब्याह खुदा सवाल. So she's very nonchalant about it. She doesn't really care about all these things, because she never could really understand all these concepts. वो बहुत ही खुदा दोस्त type है. She's really a fun person to sit around and talk to. Next interview, my mother. Why not? Why not? अच्छा, कोई चूंकि आपने कहा कि एक हम्बल बिगनिंग रही है माशाल्लाह और फिर ऊंचाई हासिल हुई, लेकिन जाहिर है जब एक इंसान की ज़िंदगी में इस तरह की बिगनिंग हो, जो माँ बाप है वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपको इस लायक बनाया कि आप इस वक्त तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है. बचपन में कोई ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो आपको याद आए और जिससे आपको ये अंदाज़ा हुआ हो कि नहीं एक जो ज़िंदगी है वो एक स्ट्रगल है? I wish I had a dramatic answer for this.
मगर टू बी ऑनेस्ट नॉट रियली, मैं काश मेरा उसको मसालेदार जवाब होता इसका, मगर मेरे पास जवाब ऐसा नहीं है। मैं इट वाज अ वेरी इवन दो यस, अगर देखा जाए एक जनरल स्ट्रगल जो हर एक इंसान की ज़िंदगी में होता है, लड़का लड़की कहाँ ते अगर आसान छो तुम शख्स अगर तुम अचीव आसान कर तुम स्ट्रगल पेवान करें, स्ट्रगल अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस, स्ट्रगल जनरल स्ट्रगल ऑफ बीइंग कश्मीरी, ये हड़ताल आसान, एजुकेशन छन एक्सेस आसान कहें, कुन सा इंटरनेट कनेक्टिविटी आसान कहें, एंड नॉट दैट गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो अपार्ट फ्रॉम जनरल स्ट्रगल्स, इवन दो आई डिडंट स्टडी हियर, बस एज अ कोशर कथ, बट apart from that, it was very linear journey, kya zyada ups and downs isne kihin, but I was personally motivated. Just because something bad did not happen to me during my childhood does not mean ki I don't deserve good things. तो दोनों में इनका समझ, I always had this will and determination in me that I want to do something. मतलब मैं उस, even though my parents illiterate, but my father through his will and determination he made something of his own. He became a very good businessman. I could have emulated him, I could have replicated him, I could have joined his business, but I always thought that I can make my own name. For example, even if my parents' financial circumstances wouldn't have changed, I would have still reached this place. No matter what. So that is something that I can personally brag to myself in the mirror. You achieved that. So that's one thing that I can say to myself. आप गोल सेटिंग पे बिलीव करते हैं या जस्ट गो विद द फ्लो? Oh no, I hate going with the flow. मेरे को बहुत दिक्कत होती है with uncertainties. I research things a lot. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सारी रिडंडेंसीज हों, बहुत सारी रिसर्च करके कि मेरे को आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं एंटिसिपेट करता हूँ, फिर मैं उनकी ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड सॉल्यूशंस निकालता हूँ, क्योंकि आई डोंट लाइक टू बी सरप्राइज्ड। मुझे सरप्राइजेस नहीं पसंद ज़िंदगी में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ को थॉरली एग्जामिन करूँ और उसके लिए कंटीजेंसी प्लान बना, फिर अगर खुदा ना खासा कुछ ऐसी चीज़ हो जो अनएंटिसिपेटेड हो तब होना, चलो ये उस खुदा इस मंजूरी। बट आई डोंट वांट टू से दैट कि मैं इल प्रिपेयर्ड था, अंडर प्रिपेयर्ड था। मैं हमेशा प्रिपेयर रहना चाहता हूँ हर किसी चीज़ से, और ये एक मेंटालिटी है मेरे दिमाग में। आई नेवर हैव मल्टीपल प्लान्स, आई नेवर हैव प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और कभी भी नहीं। सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। Never. That's my mentality. Okay. I never have multiple plans. I only have one plans, and I will have multiple ways to execute that plan. But I will make sure that my plan is achieved. वापस कब आए यहाँ और किस सिलसिले में? अब कब जाना है वापस? मैं आया, आई केम हियर लास्ट वीक, और मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल के बाद आया, और मेरी बहन की शादी थी नौशीबा नज़ीर की, एंड नौशीबा, wish you a very happy married life. I'm still trying to call you, not picking up my calls, but anyway. उसकी मैरिज थी, तो बहन की शादी थी, तो मैं आया, वो अटेंड किया, एंड I won't be able to tell you the exact dates when I'm leaving, but inshallah I'm leaving very shortly. I think 1 हफ्ते के अंदर I'll be leaving. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और साथ में हम उम्मीद ये भी करते हैं कि जितने भी नौजवान दोस्त आपको इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी गालिबन जहन में इस तरह का ख्याल आया होगा कि हम भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स।